Hey everyone, welcome back to my channel. I'm Aditi Vyas and in this video I'm going to teach you the call for chapter. It is a really short and a really beautiful chapter, so let us start without any further ado. Okay, so the very first topic I'm going to teach you is this one. Although the first topic is Cuban Missile Crisis, but as this is like basically the arena part, so I will cover this topic in this part. Okay, so let us start from this topic. I actually made a presentation in a school and I did the same thing, like I started with this topic and then added this one, so it became like quite easy to understand. So yeah, without wasting any further time, let us start our chapter. So the end of the Cold War is a landmark in the contemporary world politics. As we all know, the Second World War ended in 1945, right? In 1945, the Allied forces led by US, Soviet Union, Britain and France defeated the Axis powers led by Germany, Italy and Japan. We know that there were two forces, Allied and Axis, right? Allied forces, US, USSR, Britain and France. These four powers, in fact there were many more, but these are the major ones, defeated Germany, Italy and Japan, right? So as we all know that around the era of like 1945, many of the colonies of Britain and France became independent. India also got independence in 1947. Similarly, Indonesia got independence in somewhat 1949 and many more, right? So basically these two countries, in fact many other countries of Europe became very weak, and we are going to study this in the chapter 3 or 4. Okay, so these two powers became weak and ये तो हार ही गई थी, so there is no point of discussing their role. So now we were left with two powers, US and USSR, right? The war had involved almost all the major powers of the world and spread out to regions outside Europe, including South Asia, China, Burma, the Myanmar part, and parts of India's northeast. So the Second World War included many powers जो इन कंट्रीज से बाहर की भी थी, जैसे कि चाइना हो गया, बर्मा हो गया, साउथ ईस्ट एशिया हो गया एंड मैनी मोर. The war devastated the world in terms of human lives and civilian property. We all know कितना लॉस हुआ था उस वक्त. एंड जो एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर है वो बिगनिंग थी कोल्ड वॉर की. एज आई टोल्ड यू, एज आई एक्सप्लेन दिस राइट नाउ, बिकॉज दीज टू पावर्स बिकम वीक, सो अब ये बची नहीं. सो मेन पावर्स बची यूएस एंड यूएसएसआर. वी ऑल नो दैट जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ था वो कैसे हुआ था, जब यूएसए ड्रॉप्ड 2 bombs on the cities of Hiroshima and Nagasaki. Hiroshima and Nagasaki of Japan, right? इनमें this is out of context actually, but I think Hiroshima पे little boy and Nagasaki पे fat man. These were the code names of the bombs, right? This is the extra information, but if you can remember this, then it is very good. Then because of this, it actually happened in August 1945, I guess 8th August 1945, something like that. Which caused Japan to surrender. Okay, so जो critics हैं US के, वो कहते हैं that जो bombs थे वो ज़रूरी नहीं था गिराना, because Japan was already about to surrender. Japan already surrender करने वाला था, so there was no need of dropping the bombs. Whereas जो supporters थे US के, वो कहते हैं कि वर्ल्ड वॉर को एंड करने के लिए ड्रॉपिंग ऑफ बॉम्ब्स वॉज नेसेसरी, बिकॉज बहुत सारा एलाइड फोर्सेस की आर्मीज़ का लॉस हो रहा था, साथ ही साथ सिविलियन प्रॉपर्टी का भी लॉस हो रहा था. सो वॉट एवर द मोटिव वॉज, द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज द राइज ऑफ 2 new powers on the global stage. With the defeat of Germany and Japan, the devastation of the Europe and in many other parts of the world, the US and USSR became the greatest powers in the world with the ability to influence events anywhere on the earth. Now do not get confused, USSR is equal to Soviet Union. So if I speak USSR, do not get confused, what is this now new thing. So it is Soviet Union only, right?
Then they became the greatest powers with the ability to influence events anywhere in the world. Then the Cold War was an outcome of the emergence of US and USSR as the two superpowers rival to each other. So हम आगे पढ़ेंगे अभी that there is something known as logic of deterrence. In this, these two powers know that if they go for a like hot war, that is like using nuclear weapons or something like that, then it will be too costly for any country to bear. Like we have already had the consequences on the Japan. Like we already know what are the result of the bombs. So they could not afford that. So basically they went for logic of deterrence, according to which when two rival powers are in possession of nuclear weapons capable of inflicting death and destruction which is unacceptable to each other, a full-fledged war is unlikely to happen. जब दो पावर्स जो राइवल में हैं, जो लाइक दुश्मन है एक दूसरे की, और उनके पास में न्यूक्लियर वेपन्स बहुत सारे हैं, तो वो इतना लाइक वॉर में इन्वॉल्व नहीं हो सकती जिसकी वजह से बहुत डिस्ट्रक्शन हो जाए, क्योंकि वो किसी के लिए भी अफोर्डेबल नहीं होगा और वो महंगा ही पड़ेगा ऑब्वियसली, क्योंकि अगर कोई बचेगा नहीं तो उस विक्ट्री का मतलब क्या है. सो बेसिकली दिस इज़ द थिंग. Both sides will be so badly harmed that it will be impossible to declare one side or the other as the winner. Even if one tries to attack or disable the nuclear weapons, the other would still be left with another with enough nuclear weapons to inflict unacceptable destruction. So अगर कोई एक बॉम्ब को फेंकता भी है तो उसका जो राइवल है वो उसको डिसेबल कर भी देता है मान लो, बट फिर भी जो दूसरी पावर है उसके पास में इतने सारे बॉम्ब रह जाएंगे कि वो और भी कर सकता है, तो कितने को डिसेबल करोगे आप, राइट. सो दिस इज़ अ थिंग जो उसके बाद में अगर बहुत सारा डिस्ट्रक्शन हो जाएगा वो अनएक्सेप्टेबल होगा. इस वजह से हम फॉलो करते हैं लॉजिक ऑफ डिटरेंस को. एंड बोथ द साइड्स हैव द कैपेसिटी टू रिटेलिएट अगेंस्ट एन अटैक एंड टू कॉज सो मच डिस्ट्रक्शन दैट नीदर कैन अफोर्ड टू इनिशिएट अ वॉर. इसलिए कोल्ड वॉर हमेशा इवन दो राइवलरी बहुत इंटेंस थी, कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, बहुत इंटेंस राइवलरी थी, उसके बावजूद भी एक कोल्ड रहा और हॉट नहीं बना, हॉट या फिर शूटिंग वॉर नहीं बना. ठीक है. एंड द डिटरेंस रिलेशनशिप प्रिवेंट्स वॉर विद राइवलरी पावर्स. और जो डिटरेंस रिलेशनशिप है ना, ये वॉर को प्रिवेंट करता है बट उनके बीच की राइवलरी को नहीं करता है. सो दिस इज़ टू बी नोटेड दैट जो डिटरेंस का मतलब है कुल मिला के, इसका मतलब ये नहीं है कि इनका अब राइवलरी जो है वो ख़त्म हो जाएगी ना भाई ना, ये तो कर ही नहीं सकते हैं. जो मीनिंग है इसका वो ये है कि जो वॉर की जो प्रेडिक्टेबिलिटी यानी कि जो वॉर की संभावना है वो कम हो जाएगी कुल मिला के. नाउ द मेन मिलिट्री फीचर्स ऑफ द कोल्ड वॉर इज़ दैट the two superpowers and the countries of the rival blocs led by the superpowers were expected to behave as rational and responsible actors. इसका मतलब क्या है, जो दोनों पावर्स है यूएस एंड यूएसएसआर, इनके जो अलाइज हैं इनको लाइक कुल मिला के ब्लॉक कहेंगे. ठीक है. तो ये जो इनका ब्लॉक है वो वो एक्सपेक्ट करते थे कि जो अगली सुपर पावर है और जो ये खुद भी है वो रैशनल और रिस्पॉन्सिबल हो, और इसकी वजह से इन लोगों ने खुद को लाइक मान लो कि ये यूएसएसआर है, ये यूएस है, राइट. इनकी मिलिट्री बेस यहाँ पे कुछ हैं यूएस के, तो इन्होंने यूएसएसआर को बता रखा है कि मेरी मिलिट्री बेस यहाँ पे है, मेरे पास में 15,000 न्यूक्लियर वेपन्स है, जो भी जितना भी होता है मेरे पास में इतनी गन्स वगैरह हैं, लेकिन इनको बता के रख देते हैं ऑलरेडी, ताकि अगर बाई चांस कुछ एक्सीडेंट हो जाए तो यूएसएसआर को पता होवे कि ये यूएसएसआर ने जानबूझ के अटैक नहीं किया. बिकॉज देयर आर मैनी एग्जाम्पल्स जहाँ पे बिना गलती के भी बहुत सारे लाइक एक्सप्लोजन हो जाते हैं. अभी रिसेंटली इफ़ यू वर इन द करंट अफेयर्स दैन इंडिया का कोई मिसाइल या कुछ था जो पाकिस्तान में जाके गिरा था. सो एट दैट टाइम अगर उनको पता नहीं होता कि हमारे इंडिया में लाइक इतने वेपन्स वगैरह हैं कि हम कुछ ऐसा करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली वॉर स्टार्ट हो चुका होता. सो उस वजह से इनको ऑलरेडी बता के रखते हैं कि हमारे पास में इतनी इतनी जगह हैं, यहाँ पे हमारे मिलिट्री बेसिस हैं. और सिमिलरली यूएसएसआर बता के रखता है यूएस को कि यहाँ पे मेरे मिलिट्री बेस, यहाँ पे इतने वेपन्स वगैरह हैं, ताकि इनके बीच में एक ट्रस्ट बना रहा है. ठीक है. सो दे वर एक्सपेक्टेड टू बिहेव एज रैशनल एंड रिस्पॉन्सिबल एक्टर्स, राइट. एंड जो रिस्पॉन्सिबिलिटी और रैशन का जो मेन मकसद था वो यही था कि जो वॉर है उसको रेस्ट्रेन करना, ठीक है, उसको अवॉइड करना, कुल मिला के रिस्क ऑफ अनदर वर्ल्ड वॉर.